My name is Aishwarya Sinha. I am a social worker at iProbono, and as a support person, I have provided psychosocial support to over 200 children. Today's discussion revolves around dissecting the roles, responsibilities, and experiences of support persons across different jurisdictions by drawing a parallel between the law and the challenges faced in the implementation of the law. Through this discussion, we're also hoping to come up with recommendations for streamlining nationwide processes and practices pertaining to roles and appointment of support persons. I request you all to join me in welcoming our panelists for this session. The chair for this panel discussion is Mrs. Vaidiki Subramani. She is the current chairperson of Child Welfare Committee Lajpat Nagar in New Delhi and has been working in the child protection sector for over 20 years. She also teaches postgraduate students of social work at Indira Gandhi National Open University. Previously, she was a member of the Juvenile Justice Board and a chairperson of the Child Welfare Committee at Calcutta. She was also the honorary executive director at Akshay Pratishthan and has been associated with the Indian Council for Child Welfare in New Delhi and in Chennai. I will be moderating this session with Vaidiki ma'am. Our next panelist is Kushi Kushanappa. Kushi has been working with Enfold Proactive Health Trust Bangalore since 2010. Her work at Enfold largely involves supporting children who have faced sexual violence and their families and caregivers. She has contributed in compiling the guidelines for support persons, creating training programs for support persons in 5 states, and developing SOPs for stakeholders in Karnataka. I now welcome my next panelist, Uzma Parveen. Uzma has been working with us since 2013 as a counselor and psychologist. She provides trauma-focused therapy to the victims of child sexual abuse, child labor, and for other forms of violence faced by children. She is a psychologist with over 9 years of experience and has been responsible for conducting mental health and child rights training programs and workshops for children, educators, and other stakeholders. Our next panelist is Kashina Karim. Kashina is currently associated with Prerna in the capacity of an assistant director. Kashina has spent over 7 years working with victims of sexual violence and human trafficking. Her work has been focused on supporting children to access the child protection system as well as helping them navigate the criminal justice system. I welcome my next panelist, Jaya Shashi Sharma. An activist and social worker, Jaya Shashi Sharma has over 20 years of experience of working with children, women, and rights of craftsmen in Rajasthan. She is currently empaneled as a support person by ECPO in Jaipur district. She has also been actively involved in rescue and rehabilitation of children engaged as labor in jewelry making and textile in Jaipur. On behalf of iProbono, I thank all the panelists for joining us today and for your continued support iProbono as our valued partners. We shall begin this discussion by discussing jurisdiction-specific practices and challenges, after which we will discuss thematic issues in implementation of rules regarding the role of support persons. This session will conclude with a Q&A round between the audience members and the panelists. This conversation during the session will be in English and Hindi. I request all of you to keep your phones on silent, or अगर आपके कोई सवाल हो तो आप Q&A round में पूछ सकते हैं. I now request Vaidiki ma'am to share her perspectives on the importance of the role of a support person. Ma'am. Good afternoon, everybody. Thank you, iProbono, for inviting us. I would like to tell about the role of support persons through a case study. Way back 1.5 years, it was a very cold winter day. I got a call from a social worker from a support person agency that a baby of 7 days old is surviving for his life. We talk in the child protection system, right of survival. That point, I realized how important the very survival itself is become a right of the child. Because the baby was delivered a very premature way in the home. Of course, though medical assistance was there, the investigation officer took the survivor to the hospital only for the DNA collection sample only. The hospital concerned also did not much care for a premature baby,
and on reaching home, the child turned blue. The family called a support person in the night. It was an extreme cold day, it was recorded in Delhi also. And the support person has guided the family. She arranged a taxi to reach the family with the baby to the nearest hospital. The baby reached the nearest hospital. The hospital people has told the family and the support person that the child needs to be admitted in the neonatal intensive care unit. The hospital did not have the facility. The support person managed the ambulance to go to the nearest government hospital with the baby and the family and the survivor. Unfortunately, no beds were available in the government hospital, and she was meandering her way where the NICU bed, neonatal intensive care unit, will be available for the child. The worst thing, the oxygen supply in the ambulance was also depleting. The vitals were really going lower. Everybody was in panicky. The support person managed to get a private hospital nearby that circumstances, reached the private hospital. Unfortunately, the hospital administration saw the baby only in the ambulance. They never even allowed to enter to the hospital administration because it was extreme cold. By the time the child is being taken from the ambulance to the hospital reception also, it is becoming cold. And they said the child has to be kept in the intensive care unit, and demanded 1 lakh of rupees for the admission process. So everybody were in very perplexed. We didn't know. The support person was in constant touch with me in the night. Then I was trying to talk to the superintendent of the hospital. I could not convince the authorities. In spite of all my speaking with the rules and regulations, is a state child in CNCP category. The hospital cannot say no also. But I could not get the help from the administration. I contacted Mr. Anurag Kundu at 10 o'clock in the night. Being a commission chairperson, you please put in a word with the concerned medical superintendent and do something for the child to survive. And Anurag Kundu pitched in the situation, and he was also talking, we were also talking, the time was only elapsing, that no emergency, even first aid was given to the child except the oxygen supply was going only. So then we wrote in district magistrate at 11:30, and with the DCPSR commission chairperson, with CWC's chairperson, and the support person, and the DM, the child was admitted in the NICU at 12 o'clock. So this was a situation that is really shocking, how we protect the very survival of the child. Except that courageous support person from the organization who has been there in the field, calling people, coordinating with all the agencies. And apart from coordinating with agencies, she is also giving moral support to the family, the survivor, and the baby. She is also a young social worker like Aishwarya. You can imagine how much she will also be able to respond and react to the situation. With so much of boldness, so much of courage that she was fighting. The child was admitted at nearly 12 o'clock. The child survived, and the next day DCPSR has taken an initiation of inquiry in the hospital. They also inquired the subdivision hospital for not being treated the premature baby in an appropriate way. That inquiry is still also going on. The support person went for the inquiry. She very boldly said what has happened in the administration of the private hospital. The private hospital was literally torn into pieces. We collected all the video graphy and the CCTV footage and everything, how the entire process went also. Still the inquiry is going on. The child survived only because of the support person in this particular case. What's the role that a young girl has played in the midnight of the Delhi winter cold days? And the story didn't stop there also. The child was in the neonatal care. The child started picking up health, and the child was doing fine. Then the child was placed in the
specialist adoption agency. The mother was conceived because she is a young survivor. She has to proceed in her life. She was counseled with mental health professionals. The family was fortunately supportive in this case. It was not an incest case. So that was one big relief in this particular case. The family was supporting. The child was constantly being given the counseling part for surrendering the baby. The child was staying with the baby in the neonatal care. Naturally, she will also have that motherhood, the attachment, everything. So that the entire the process, the support person has coordinated. Then the child was kept in the specialized adoption agency. And in the 15 days, the hospital could not recognize that child didn't have a vision in the eye. Whereas the specialized adoption agency could find the child did not have vision in the eye because of the premature baby. They would conducted the laser surgery and the child also got the vision in the eyes. Then fortunately the child got in adoption, everything smoothly ended. So what is the role of a support person? I have really realized, especially the right of the survival and development we talk about in the child protection system, how we rope in, how the support person plays an illustrious manner. The roles are, their roles, how it has been expanded, how a person can be so much pervasive in doing this work. It was very touching for me, and I will never forget the young girl who has been stood as a support person in this particular case. Thank you. Thank you so much, ma'am. And like ma'am just mentioned, this is not just an example of the kind of work that support persons do, but of excellent stakeholder collaboration, that everybody was available at that time at 10 a.m., sorry, 10 p.m. until midnight. Everybody was on calls and just trying to figure out what can we do for this child. Thank you so much for that, ma'am. So we will now learn from each other and understand about jurisdiction-specific practices, because the panelists come from different jurisdictions and states. I would like to first start with Uzma. And like I had mentioned, Uzma आपके साथ as a support person करीब 9-10 सालों से काम कर रही है. तो Uzma, that's what I want to ask you. How have you seen this space evolve in the last 10 years? अगर हम बात करें कि अब हम देखते हैं दिल्ली में कोर्ट्स बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, CWC और कोर्ट्स काफ़ी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट पर्सन जुड़े हैं. तो इस पर अगर आप बात कर सकें. थैंक यू. Yes, you are right कि अब बहुत सारी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब मुद्दों पे काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका केस लोड कम नहीं हो रहा है. एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं हम लोगों के साथ, उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका केस लोड का कुछ क्राइटेरिया है. तो आई थिंक उसकी वजह से जो ये एक चेंज आना चाहिए था कि हक ही सिर्फ ना रहता और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और बहुत सारी, तो उसकी एक वजह ये भी है कि लिमिटेशन बहुत कम है, रिसोर्सेज नहीं है. जैसे कि सपोर्ट पर्सन बाय गवर्नमेंट नहीं है, जो कि होने चाहिए कि गवर्नमेंट के पास एक पैनल हो सपोर्ट पर्सन का जो वो अपॉइंट कर सके. दूसरा ये कि हाँ, पहले से एक्नॉलेज किया जा रहा है, या पहले की बनिस्बत 2013 में जब हम कोर्ट जाते थे, अब जाते कि हाँ आप सपोर्ट पर्सन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अगर हमारे पास, अगर हक के पास वो केस लीगल है, तो सपोर्ट पर्सन को परमिशन है बच्चे के साथ उसकी टेस्टिमनी में बैठने के लिए या उसकी लीगल इंफॉर्मेशन देने के लिए. लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास वो केस लीगल नहीं है, सिर्फ साइको सोशल हम उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो सपोर्ट पर्सन लीगल अपडेट नहीं ले पाता है कोर्ट से, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं. जबकि पॉक्सो के रूल में अगर देखा जाए तो सपोर्ट पर्सन को, फैमिली को लीगल अपडेट का भी अपडेट करते रहना है कि केस कौन से स्टेज पे है. अभी ई कोर्ट की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी डेट लगी है, लेकिन वहाँ पे बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि मिसलेनियस पे लगा हुआ है, एविडेंस पे लगा है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है. दूसरा जो एक चैलेंज है कि अभी भी कोर्ट्स के पास सपोर्ट पर्सन की लिस्ट नहीं है. डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से सपोर्ट पर्सन हैं वो कोर्ट के पास नहीं है. अभी कुछ टाइम पहले साकेत में एक लेडी जज थी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि हर सेल्फ स्टार्ट आस्किंग कि कौन कौन सपोर्ट पर्सन है. उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाया हुआ था, इवन वो बात मिलती थी सपोर्ट पर्सन से, बच्चे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेती थी.
तो अफकोर्स हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि और हम जो ये चैलेंजेस हैं, जो ये कमियां रह गई हैं, उन्हें हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे. तो ये Thank you, Usman. And my next question is to Kushi. So Kushi, you drafted this wonderful handbook for support persons, which is a very nice guiding document for most of us. So I just wanted to learn from you that what encouraged and prompted N4 to come up with a handbook like this. So the group of support persons that work at Enfold are not social workers at all. We're not lawyers, not doctors, nothing. It just sort of grew organically, and I can assure you we made several mistakes along the way. We compromised the legal sanctity of cases. There are so many lawyers in this room who will laugh at the things that we did in the early days, where we would take documents and go and give it to the court, and the court would even accept it. Some of them were pre-POXO, and then POXO came in 2012. We really made a lot of mistakes, and we know that we probably compromised the case. Of course, law can be reversed. You all know ways in which we can fix things. You all did that, but still, it delayed processes. We made mistakes, and there were some things which were irreversible. As we continue to work over the years, we realized that this whole cadre of support persons is a very disorganized sector. There are a lot of people. There might be organizations like HUC who have trained people who are working in this area, but a lot of us were not. So our experiences of journeying the system, learning from the families and learning from all the experts that we had an opportunity to work with, it seemed like it would really convert into a really good handbook. So Prerna was already working on some guidelines for support persons, so they came forward, and together along with the support of UNICEF, we did come up with this handbook, which provides, I unfortunately only have the Hindi translation with us. This is available online, but what it did was provide some basic knowledge and understanding of how a support person needs to engage with stakeholders, which is also a really key factor. We don't realize that how the way in which we engage with stakeholders can be detrimental or beneficial to the case. It should never be that a police officer looks at us and says, "Arey, fir se support person aa gaye dimag khane ke liye." So, to be able to tell people how you have to engage with people, what are some of the boundaries, and how do you ensure that a case is supported and not affected, is something we've tried to capture. A lot of case experiences, a lot of our, of course, legal references of POXO Act, CRPC, IPC, etc. are included in this, and a lot of experts have opined on what a support person can and can't do. Yeah, I'll stop it. Thank you, Kushi. So since we have a diverse audience, I'll just give a little context. So N4 came up with this handbook on support persons, and they have actually explained to every stage of a POXO trial, pre-trial and during trial, the various stages at which a support person can intervene, what is the kind of support they can provide. Also by giving case illustrations and their own experience, like Kushi had just mentioned. So that's about it. And going on to Kashina. So Kashina, I just want to understand in your jurisdiction, what kind of challenges do you face when I speak of working with the different stakeholders, like the police, CWC, and the courts? And do you think, like she was saying, that most of the support persons, in full, like they were not trained earlier and they just learned organically. So do you think support persons receive adequate training to deal with these challenges? Thanks, Aishwarya. I think I'm going to break that down into two parts. One is to talk a little bit about the challenges with regards to support person and the stakeholders. I think one thing that we've all who have been in the child protection space over the last almost 10 years, POXO के आने के बाद 2012 के बाद से अगर हम देखें तो I think like Usma was also mentioning कि support person का recognition नहीं था. शुरू में जहाँ पे we didn't know what the role of the support person was, who the support person essentially was. A lot of us did not come from social work background. Some of us did come from the social work background. We also had certain lawyers who also came from social work background. So we had a mix of individuals, and what are these individuals actually trying to do as support persons, I think was not very clear initially. And I think over a period of time with different stakeholders like the police,
And the courts, the role of the support person, I think, is becoming clearer. Even though it's not the best, I think it's becoming much clearer. कई बार पर अब भी मुझे ऐसा लगता है जब हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं टू एक्सप्लेन व्हाट अ सपोर्ट पर्सन शुड आइडियली नॉट बी डूइंग बिकॉज अ सपोर्ट पर्सन अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो गेट्स misunderstood as a social worker, only a social worker also in a lot of situations, which is why the expectation from a support person is also extreme. और ये सपोर्ट पर्सन एक व्यक्ति टिपिकली होता है तो उससे इतना सारा एक्सपेक्टेशन रखना कि वो एक व्यक्ति इतनी सारी चीजें और इतनी डाइवर्स चीजें कर पाएगा ये भी थोड़ा सा मुश्किल है. सो आई थिंक टू स्टिल मेंटेन क्लैरिटी ऑफ रोल of a support person when it comes to different stakeholders definitely continues to be a challenge. I think when it comes to the police, once the police does realize that there is value in having the support person around, जैसे इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ प्रोसेस होना है उसमें सपोर्ट पर्सन रहेगा तो बच्चे के लिए बेनिफिट होगा, ये जब वो समझते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि हर प्रोसेस में फिर सपोर्ट पर्सन जुड़ जाए. मतलब अगर समझिए कि पंचनामा करना है या विक्टिम आइडेंटिफिकेशन करना है, in this one case I remember we had about 30 accused in a particular case and they expected us to be present for every victim identification parade, which was practically impossible. मतलब सिर्फ अगर ऐसा करते तो फिर हमें सिर्फ वो एक ही केस पे काम करना पड़ता, एक सोशल वर्कर को उस एक ही केस में लगाना पड़ता, which is practically not possible. So I think that definitely is one challenge. पुलिस के साथ भी कई बार पुलिस की भी अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि क्योंकि ये सपोर्ट पर्सन है इनको आप बुलाएंगे तो ये अब आ जाएंगे, है ना. कल विक्टिम आइडेंटिफिकेशन परेड है या कल कोर्ट जाना है और आज हमें पता चलेगा कि कल कोर्ट जाना है और कल सुबह 10 बजे कहीं पे पहुंचना है और आज शाम को 6 बजे हमें पता चल रहा है कि दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स डेफिनेटली आर still exist. I think with regards to child welfare committee and the larger child protection system, a big challenge is to understand and assess in what cases support person is actually required. Do we require support person in all cases? We believe that we may not require support person in each and every case. Then what are the cases in which support persons may be required? If you look at the rules also, the rules specifically say that the CWC support is supposed to appoint a support person after conducting a needs assessment and knowing whether there is a need for a support person to exist in a case or not. And in most cases, in extremely enthusiastic and over-resourced districts like Bombay, the CWCs end up then appointing support person in every other case, right? जहाँ पे शायद उतनी जरूरत नहीं है सारे केसेस में सपोर्ट पर्सन की, तो हम रिसोर्सेज को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ग्रोइंग चैलेंज स्पेशली व्हेन वी वर्क विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. थैंक यू कृष्णा. और कृष्णा ने अभी जो भी चैलेंजेस के बारे में बात करी है रोल्स को लेके या ज़रूरत को लेके सपोर्ट पर्सन्स की, हम आगे के सेशन पे उस पर और भी डिटेल में बात करेंगे. अब जया शशि जी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि हम जयपुर में भी आपके साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं और जितना हम जान पाए कि सपोर्ट पर्सन्स का जैसे अभी DCPO ने एक पैनल क्रिएट करा था, तो जब से आप काम कर रही हैं तब में और अब में आपने कितना फर्क देखा है कि लोग आपके रोल को समझते हैं, उसे एक्सेप्ट करने लगे हैं, आपकी प्रेजेंस पे सवाल नहीं उठाते कि आप किस हक से यहाँ पर आई हैं, आप क्यों हैं बच्चे के साथ, आपका यहाँ पे क्या काम है. तो अगर आप इसके बारे में बात करें. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बैक में जाऊँगी कि मैं 2008 से जयपुर में चाइल्ड में काम करती थी. तो चाइल्ड में बच्चे की जैसे कॉल आती तो बच्चे के साथ मिलते थे, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उनके साथ यौन जो व्यवहार हुआ, जो भी बात हुई बच्चे की, हम एक काउंसलिंग करते रिपोर्ट बनाते थे. तो उस समय की पहचान के बाद अगर हम आज बात करते हैं कि पुलिस की पूरा एक सिस्टम के साथ एक अपना नेटवर्क हो गया था, DCPO के साथ नेटवर्क था, CW के साथ नेटवर्क था, पुलिस के साथ लाइजनिंग थी, उन सब चीज़ों के बाद. लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि उस समय अगर सपोर्ट पर्सन का अगर पीछे देखते हैं तो हमें कानूनी रूप से हमारा एक पावर नहीं थी. अगर सपोर्ट पर्सन बनाने के बाद कानूनी प्रावधान दिया तो हम पावर के साथ कह सकते हैं कि पहले पुलिस का अगर जब वो इन्वेस्टिगेशन करता, बच्चे स्टेटमेंट लेता तो बच्चे को हमारे बच्चे के पास में नहीं रहने देता था. लेकिन आज हम उस बच्चे के पास में रह के उस बच्चे को स्टॉप कर सकते हैं कि आपके साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जब जो पीड़ा बीती है, आप उसको आसान तरीके से आराम से बता सकते हो. हम आपके साथ में घबराने की जरूरत, क्योंकि जो बच्चा होता है बहुत मासूम होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि अपने आप को अपना उतना जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं होता कि अपनी बात को सहजता से और बिना डर के कह सके. और इसके साथ साथ पूरा एक हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ हमें उसको प्रोएक्टिव बनाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है कि अकेले काम एक सपोर्ट पर्सन नहीं कर सकता है. जिन जिन स्टेक होल्डर की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हमें
हमें प्रोएक्टिव करना है कि हम इस चीज़ पे सब लोग मिलकर कैसे बच्चे की ये साथ विक्टिमनेस हुआ है उनको हम कैसे अच्छे तरीके से बच्चे के साथ न्याय दिला सकते हैं, और जिसने क्राइम किया है उसको हम सब लोग मिला के कैसे उसको सजा दिला सकते हैं, ताकि एक समाज में मैसेज आए कि बच्चों के साथ इस प्रकार का अगर क्राइम करेगा तो इस प्रकार की समाज एक सजा मिलेगी। तो एक अवेयरनेस का पार्ट है कि अगर जो सजा जिसको मिली है उस हर जगह अगर उसकी बात की पब्लिसाइज करेंगे तो एक समाज में फेंका वातावरण है, बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार की संभावनाएं कम होने लगी। Thank you, Jayaji. And to sum up, ma'am, I would actually request you to share your experience and what are some of the positive developments you've seen when we speak of stakeholder collaboration in the tenure, because you worked as a chairperson in 2 different tenures into CWC. So how do you see that development back then and now? So when I joined Child Welfare Committee in 2014, when I started with ISMA only, the HUC was the main support persons, and we were not appointing support persons in all the cases also. So where that incest case is there, or MTP cases are there, or the girl is pregnant, about to be delivered, or the otherwise some intense case only we used to appoint the support persons. So that was a scenario in 2014 and 17, and when the act changed in 15, so then we were slightly increased the scope of support persons, and they were mainly doing the court familiarization and child's deposition and things like that only. Now, after serving 1 tenure in CWC, when I go back to JJB and again coming back in that 6 years of gap, the support person's role has become literally like a public works department, we would say. So if a child is undergoing MTP, the mother or anybody from the family is not available, the support person is waiting in the hospital. So that becomes what you have said. What is the role of a support person? The support person can help the child in making aware of the legal rights and the psychosocial support. Definitely not being in the hospital for 24 hours, being in the hospital. One child has asked, in fact, chicken soup at that time. So that becomes too much for a support person to provide in such cases. Do we have to hear everything by the family or for the child? So that is become a bit too much nowadays. And more so previously, it was only restricting only the court things like that. Now we ask a support person. CWC is also now to become greedy, to get the school admission, to get the disability certificate, to change the houses and things like that. So I think somewhere we also, as CWC, I must accept, we also expect too much from support persons. So as Katrina was telling, we must have some sort of guidelines or some, and I won't call it a SOP because we're tired of SOPs from the departments and other things also. So we must have some protocols, some ethics, some work, what a support person can do, what a family can do. So in the entire child protection process, in my observation, we leave the family responsibility. After the family responsibility should be educated, not only educating the child about the legal rights or anything, the responsibility of the family. Ultimately, the child has to go to the family only. So even in an incest case, so we tend to in CWC, the father is in judicial custody. Why not we restore the child to the family? Again, there also we try to know, some court may ask questions, they may ask questions, and the father is in judicial custody, I agree. And we condemn the father instead of condemning the action. We never even allow, suppose the child is asking, I want to meet my father. No, you can't meet that father. That's what we are, this is a mindset. In the previous session also, Mr. Kundu was telling, this is our mindset. I think we need to break this mindset. We need to see the responsibility of the family also, and we must definitely have definite guidelines for the support persons, where they can work, where they cannot be stretched. Otherwise, we are stretching the role of support person too much. And maybe we are in Delhi, we have luxury of many support persons, so we are extracting. Across the length and breadth of the country, we may not be able to have this much resources. And as Usma says, we have resources, it can be, need not be replicated in only one particular cases. It has to be distributed evenly where the needs are required. Thank you. Thank you so much, ma'am.
thank you everyone for this very insightful discussion. Now move on to discussing some thematic issues. There are broadly 3 issues we will be discussing today. So the first issue is about the appointment of support persons, and this is something that I've picked up from the POCSO rules 2020. There's a specific rule, so Rule 4 in detail describes about the care and protection, basically the rehabilitation segment. And when we speak of sub-rule 8 of Rule 4, this is the particular clause, the very first clause, which speaks of how the CWC appoints a support person. So when I look at this, there's one particular clause in this, which is that the support person is to be appointed with the consent of the child's parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence. So now this has been debatable across jurisdictions because a lot of people then cite this as a particular reason for not appointing a support person in these cases, that the family did not give his consent. Now, the thing is that when I look at this particular clause, the issues that I can see, that in case there's a child who's been abandoned, who doesn't have a parent, guardian, caregiver, then who's giving this consent? Like we've been discussing that we have so many cases of incest where the family is anyway not interested in pursuing the case. So वहाँ consent कोई भी नहीं देना चाहता. या जनरली भी फैमिलीज जब तक CWC आती हैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करके पुलिस, डॉक्टर्स, कोर्ट में जाकर बार बार वही चीज रिपीट करना और फिर एकदम से CWC के सामने आकर उनसे अगर कोई पूछ भी रहा है कि क्या आपको सपोर्ट पर्सन चाहिए तो उस समय फ्रस्ट्रेशन में भी मना कर देंगे. So I completely understand that the concept of child's participation is enshrined in the UNCRC and the JJ Act, and all of us definitely follow that. The child's participation is key. लेकिन इन सिचुएशंस में कंसेंट लेना कुछ हद तक मुश्किल होता है. सो आई वुड लाइक टू एक्चुअली स्टार्ट विद खुशी ऑन दैट नोट. सो खुशी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लॉज? I think culturally and socially consent is not even something that we consider at all, and least of all for children. I mean, इनका consent लेना है. For medical examinations, we've held children down physically and taken, collected samples and stuff. So consent is not even something that's a priority, unfortunately. But I think it's really essential that we do take the consent of them. Many of them, like Ashina already mentioned, they may not want a support person. So many situations where they're consensual relationships, romantic relationships, but they don't want this case to go forward. So then why are we wasting our resources by appointing a support person when this person could be used the services could be used somewhere else? So as a practice, even now in Bangalore, despite us being there and despite being so entrenched in the system, even now CWC will say ki haan, we've appointed you as a support person and just follow up on this matter. Despite us being with them and they know what our position on taking the consent, we wouldn't have met the child and the family. They'll say go and follow up on, like man said, go and get a education certificate, birth certificate, Aadhaar card bana do. Dude, I don't even know who this child is. What are you? So forget about consent. We're not even made aware that we are being appointed as a support person, and then this child definitely is not aware that there is a support person. They don't know what the concept of support person is, and like you said, out of frustration, they'll say, I don't want to deal with any more people right now. So if we are not even explaining to them what the purpose and the objective and the benefits or the advantages of having a support person, and then explaining that you have the prerogative to say, I don't want a support person. Not happening. Long story short. Thank you, Kriti. That's actually right. A lot of families also, when we speak to them, they also say कि कहाँ से बोल रहे हैं मैडम support person. We tell them मुझे समझ नहीं है support person क्या है, क्योंकि कई सारी families से इसको हिंदी भी ठीक से नहीं समझ में आती. तो आप कहाँ तक उन्हें समझाएंगे कि support person कौन है और हम क्या करेंगे? So that's very difficult. And Tashina, I also want to know your perspective that if this is a practice in your state and jurisdiction, then how is this consent also recorded? Because I think there's no prescribed format. It just says getting consent, but recording consent is not there. So I think in Bombay and adjoining districts, what we have noticed is जहाँ पे consent सारे cases में consent नहीं लिया जाता. There are times जहाँ पे ऑर्डर पास हो चुका है, हमें 2 महीने बाद ऑर्डर मिलता है कि अरे आपको इस केस में सपोर्ट पर्सन अपॉइंट किया है. तो ना माँ बाप को पता है ना सपोर्ट पर्सन को पता है कि वो सपोर्ट पर्सन है. सिर्फ CWC के रिकॉर्ड्स पे ये है कि ये व्यक्ति सपोर्ट पर्सन है, बट नोबडी नोज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सपोर्ट पर्सन. और 1 महीना 2 महीना कई बार 3 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं होता है.
सो दैट इज डेफिनेटली वन थिंग जहाँ पे रिकॉर्ड होता है, माने अगर बच्चा और उनके साथ उनके केयर गिवर अगर सामने CWC के मौजूद हैं, मतलब प्रोड्यूस हुए हैं, और तब अगर वो ऑर्डर पास होना हुआ होता है, तो तब उनको पूछा नहीं जाता है, उनको बोला जाता है या उन्हें बताया जाता है कि ये सपोर्ट पर्सन है, ये आपको ये चीज़ों में मदद करेंगे. So that is what we've typically seen, and that in some ways gets recorded on the order itself. So CWC जो order pass करती हैं उसी पे लिख दिया जाता है कि हाँ ये इनको बता दिया गया है कि सपोर्ट पर्सन अपॉइंट हो चुके हैं. This is largely the practice that we've seen in Mumbai and the adjoining districts where we work with. I would just like to add one thing, I think interpretation in some ways that we've also figured out. जैसे हम कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में भी डील करते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन आर रेस्क्यूड फ्रॉम द सेक्स ट्रेड, एंड वहाँ पे कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ दीज केसेस द चिल्ड्रन, द फैमिलीज आर इन्वॉल्व, द केयर गिवर्स आर इन्वॉल्व इन एक्चुअली ट्रैफिकिंग द चिल्ड्रन for the purposes of commercial sexual exploitation. So to get consent from a family member is extremely difficult in these situations. So यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको समझाया जाता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए अपॉइंट हुआ तो हाउ वुड इट बेनिफिट यू इन टू द फ्यूचर. And in those cases, then taking the child into confidence, a support person has, in some cases, we've also been appointed as support person, taking the child into confidence, जहाँ पे in some ways you see family या caregiver या parent का कहीं पे भी consent इस तरीके से नहीं, explicitly नहीं लिया जाता है. So yeah, that's what I would say. Thank you, Kashina. जय जी, जयपुर में क्या इस तरीके की प्रैक्टिस है कि CWC कंसेंट लेकर अपॉइंट करती है या किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है? जयपुर में भी यही स्थिति है कि एक सपोर्ट पर्सन की लिस्ट, DCPU की लिस्ट में सपोर्ट पर्सन है और पुलिस के पास में CWC के पास में FIR आ गई है. अब वो FIR के आधार पर देखते हुए कि केस कितना गंभीर है तो एक ऑर्डर निकाल देती है. ऑर्डर निकालने के बाद वो सपोर्ट पर्सन के पास में जाता है. पहले उनकी मीटिंग नहीं होती है, वो सपोर्ट पर्सन प्रयास करता है उस फैमिली से टच करने के लिए. अब बच्चे से तो बाद में मिलता है, पहले सपोर्ट पर्सन उसकी फैमिली में जितने स्टेक होल्डर हैं, फैमिली के आसपास भी बहुत सारे स्टेक होल्डर मिल जाएंगे कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका ये करें वो करेंगे, और सब चीजें आपने पहले से प्लानिंग कर लें, क्योंकि वहां भी उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो उस बच्चे को दोषी ठहरा रहे हैं, न कि उस क्रिमिनल को जिसने अपराध किया है. और उस पूरी फैमिली कहती है तुम्हारा बच्चा बच्ची है ही ऐसा है, तुम ऐसे ही करते हो. तो ये सब चीजें हैं, तो एक समय लगता है बच्चे की सपोर्ट करने के लिए. हमें समय लगता है, पूरा जो लेयर बना होता है उसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो आउटर है, हम आपके बहुत नजदीकी हैं, आप जितना हमारे पर भरोसा करते हैं उतना अपने सपोर्ट पर्सन पे करोगे. लेकिन धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है हम लोगों को, उनको बताना पड़ता है. पहले फैमिली के जितने रिश्तेदार आते हैं उनको समझाना पड़ता है कि हम क्यों आए, किस लिए आए हैं. फिर बाद में लास्ट में जाके बच्चे से हम बात करते हैं, और वाकई बच्चा इतना वो होता है अपनी फैमिली को अपनी बात पूरी नहीं बता पाता, क्योंकि उसको देखिए बात एक विश्वास की नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी बात को गोपनीय तरीके से, उसका विश्वास कौन रख सकता है. अगर कोई भी एक लड़की या लड़का देखेंगे, माँ बाप को इतनी बात नहीं बताता जितना उसका भरोसा जिसका पीएम जिस पे होगा वो बता पाएगा, उसको लगा कि मेरी बात किसी की साइड नहीं की जाएगी. तो एक चैलेंज तो है ही. देखिए सिस्टम में भी है कुछ खामियां, और हमारे समाज की जो संस्कृति जो चीजें बनी, जो परंपराएं बनी, उसको तोड़ना भी सोशल सपोर्ट पर्सन के लिए बहुत चैलेंज है. लेकिन एक समय के बाद सपोर्ट पर्सन एक जुझारू व्यक्ति होता है, उसके होता है कि मुझे तो इस बच्चे को न्याय दिलाना है, और उस बच्चा जो ट्रॉमा से गुजर रहा है उस स्थिति से हमें उसको बाहर निकालना है. तो अपनी हर तरीके से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज करते चैन बनाते उस बच्चे के लास्ट में वो मदद करता है. लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में सपोर्ट पर्सन की जो भूमिका, जो उसको एक सम्मान मिलना चाहिए उसको, वो अभी भी नहीं है. Thank you, Jaya ji. And ma'am, I just want to ask you that as representative of the CWC, and we also have other CWC members with us today. So when the JJ Act gives you the power, has the CWC been invested with the power of deciding in the child's best interest, and you are responsible for the child's care and protection. So even if you feel that there is a child who needs a support person, and even if you're not able to get consent of the guardian, is this in any way detrimental to the child or the case, like the appointment of the support person without getting consent? क्या उसका कोई नुकसान भी हो सकता है केस पे और बच्चे पर? I will actually the CWC is vested with the power to appoint a support person, but the child comes to CWC
after the initial trauma of registering the FIR, going to MOM for 164 statement, and going to medical, and in the last end only the child comes to the child welfare committee. By then, maximum problem has already happened. So where that support person would have been a better role is not available. Maybe in Delhi we have the CAC counselors, but how far they are equipped, how far they are given training to handle the child, even for deposition of 161 or 164 in medical. In most 363 cases, the examination has been refused by the child, because a lot of tutoring happens either by the family or by the maximum by the IOs. That's what we hear from the child welfare committee. So when the case is produced before the child welfare committee, there only the appointment of support person comes into play as per the act. Then we appoint the support persons. As rightly she was telling that in South District, especially where we work, in one district judge has asked for support persons in all the cases, and she has given the list from 2014 onwards to retrieve the cases to appoint a support person. It becomes a very Herculean task. We get the summons to get the support persons to prepare the rehabilitation plan for the child. Actually, we could not even trace the files of 2012 and 14. Because of COVID, there were a lot of cases which was not attended. The cases have been taken in the later stage. Then we are not able to trace the file, then where to trace a support person in that case, whether they are appointed, and even where to trace the child, whether the child requires, whether the needs can be identified or not. That also becomes a problem. Then answering your question, whether the support person is not appointed, definitely in cases of incest cases or in cases of other intense cases, it will become detrimental to the child immunity. Because if the support person is there, the instance where I quote, there are similar cases, there are many cases where the child and the family, they are not aware of many things. So for that, appointment of support person is a must. And it is CWC's role also to inform the child and the family that the support person has been appointed for you, the so-and-so will call you and they will do a home visit and they will be able to navigate through your court procedures and other procedures. It is our duty also to inform the family before us, because they are produced before us, we are only appointing. It is a CWC duty to make them aware of the support persons, so that the child gets the justice and child gets the protection, and child will be able to have a better rehabilitation services that can be availed from the system through a support person. Thank you, ma'am. I would now move on to, yeah, of course, please. Yeah. So appointed a support person after taking consent, or I think consent is very important. Equally, child consent is also very important. तो मैं दो केस स्टडी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि जहाँ पे सपोर्ट पर्सन अपॉइंट करना है और जहाँ पे सपोर्ट पर्सन जबरदस्ती विदाउट कंसेंट और कंसेंट के साथ। मैम की टाइम का एक केस है, एक बच्ची थी 14 to 15 years, वो असम की रहने वाली थी और यहाँ पे अपने ही गांव की किसी फैमिली के यहाँ पे एज अ बच्चों की केयर टेकर के लिए वो उन्हें लेके आए थे। बच्ची वहाँ पे कुछ रही, 5-6 महीने रही। उसके बाद उनके जो ओनर जिनके साथ वो आई थी, जिन्हें वो भैया बोलती थी, उन्होंने उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट करना स्टार्ट किया। बच्ची ने कुछ दिन 10-15 दिन बाद हुआ। उसके बाद एक दिन वो सुबह घर से निकल गई, थोड़ी सी दूर आगे जाके एक लोकेलिटी में, क्योंकि उसके पास वापस जाने का कोई जगह नहीं था, उसे पुलिस स्टेशन नहीं पता था, वो यहाँ की रहने वाली नहीं थी, तो वो सिर्फ सड़क पे इधर से उधर घूम रही थी। तभी किसी एक लेडी ने जो बहुत देर से उसे नोटिस कर रही थी, उन्होंने उसे बुलाया अपने पास और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, तो उसने उन्हें सब कुछ डिस्क्लोज किया। उसके बाद वो लेडी हमको जानती थी, उन्होंने हमको एक कॉल किया, हम लोग गए, हमने FIR कराया, सब कुछ किया। जब बच्ची का प्रोडक्शन हुआ CWC में, तो जो ओनर था वो उसकी मदर को असम से जाके लेके आ गया। CWC में आके मदर ने बोला कि हमें सपोर्ट पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे इस केस के लिए सपोर्ट पर्सन नहीं चाहिए। बच्ची ने मम्मी से अपनी लैंग्वेज में असमी में जो भी बात की, उसके बाद बच्ची रोने लगी और बच्ची ने फिर बोला कि मुझे सपोर्ट पर्सन चाहिए क्योंकि मम्मी ये केस नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे की कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे इलोपमेंट का एंगल है,
तो फैमिली तो चाहती है कि सपोर्ट पर्सन अपॉइंटेड हो, पर बच्चा तो नहीं चाहता कि सपोर्ट पर्सन से मिले। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सपोर्ट पर्सन के डर से कि दीदी आएंगी हमसे पूछेंगी, कोर्ट लेके जाएंगी, बच्चों में देखा गया कि रनिंग अवे टेंडेंसीज आ गई हैं जो उन्हें फिर दूसरी किसी अनसेफ सिचुएशन में फंसा देता है। तो इस चीज के लिए बोलते हैं कि कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बच्चे की कंसेंट होना मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली की तो है, इंसेस्ट केसेस में फैमिली कभी भी अलाउ नहीं करती सपोर्ट पर्सन की होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इलोपमेंट का केस है तो, और बच्चों को उसकी वजह से क्या क्या फिर नुकसान हो सकते हैं, उसकी वजह से किन किन अनसेफ सिचुएशन या किसी दूसरे क्राइम में वो कैसे फंस सकते हैं, वो बहुत ज्यादा। Very good point. Thank you so much, Isma. Okay, so the next theme for this discussion is around the role of support persons. जो हम इतनी देर से सब डिस्कस कर रहे हैं कि ये रोल कहीं खत्म भी होता है या नहीं, और कोई लिमिटेशन है इसकी या फिर सब कुछ ही करेंगे. So yeah, I would actually start with Kashina. Kashina से कुछ टाइम पहले हमारा एक डिस्कशन हो रहा था इस चीज़ पर, और कशिना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किया था कि जो सपोर्ट एक सपोर्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है वो एक इंडिविजुअल सपोर्ट पर्सन नहीं दे सकते. तो कशिना, if you would like to talk about this and how do you think that the kind of support varies in this situation? So I think this expanded role of a support person, ये हम NGO जो the people who represent community civil society organizations, ये हमारा किया था है. I often feel that 2012 से जो जिस तरीके से हमने रोल ऑफ सपोर्ट पर्सन को इवॉल्व होते हुए देखा है 2020 तक, इन द न्यू रूल्स आल्सो द वे दैट द रोल हैज नाउ बीन थोड़ा सा चेंज हुआ है. तो आई थिंक दिस इज लार्जली टू डू विद, और अगर हम देखें भी तो वो पर्सपेक्टिव ये है कि मैक्सिमम ऑफ द सपोर्ट पर्सन्स दैट हैव बीन अपॉइंटेड, आई थिंक अक्रॉस द कंट्री अगर हम देखें, पहले तो सारी जगहों पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम देखें, सारे स्टेट्स देखें, तो वहाँ पे सपोर्ट पर्सन उस तरीके से अपॉइंट नहीं हो रहे हैं. जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर स्टाफ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट होता है सपोर्ट पर्सन्स का. और ऑल्सो अ डिफरेंस ये आई थिंक वी बीन रियलाइजिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स व्हेन we've been interacting with different community-based organizations, civil society organizations across the state of Maharashtra. So what a Prerna can do as compared to what another organization in say a Pune district or an Ahmednagar district of Maharashtra can also do is also very different. So वहाँ पे भी I think हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि organizations also the kind of support person services that organization representatives may be able to offer may also vary differently across the districts, so to speak. So हमारे जैसी संस्था, प्रेरणा जैसी संस्था, हक जैसी संस्था जितना भी कुछ कर पाए हैं, that is also because we have that kind of a backing. I would just like to end this with one point. I remember when we were जब 2012, 13, 14 में support persons नए अपॉइंट हुए थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रेरणा, हमने काफी आई थिंक रोल ऑफ सपोर्ट पर्सन को एक्सपेरिमेंट बहुत किया उस रोल के साथ में. सो आई रिमेंबर इन केसेस, और हमारा एक गाइडलाइंस है जो आई थिंक एनफोल्ड, जब ये किताब डेवलप कर रहे थे तो हमने वो गाइडलाइंस भी काफ़ी हद तक यूज़ किया था, बेसिकली टू से कि केस वर्कर्स का क्या क्या रोल हो सकता है व्हेन इट कम्स टू अ सपोर्ट पर्सन. एंड उन डॉक्यूमेंट्स में आई रिमेंबर अस ऑल्सो पुटिंग दिस कि जब ट्रायल हो जाता है या द चाइल्ड इज कॉल्ड टू कोर्ट at any point in time, the child goes through a certain process, right? Psychosocially the child goes through a certain process, and it's important for the child to relieve that in some particular manner. And हमने ये भी लिखा था that as support persons we should help in that process of relief. मतलब उनको कहीं बीच ले गए या कहीं बाहर ले गए ताकि वो they feel better after probably testifying in the court. Now when we look at things like this, we are like, we can do it. But can a person who is working in a tier 2 city, tier 3 city, would they have the capacity to do that? Probably not. So I think everything that we say today in terms of what the role of a support person is, I think we need to specifically, organizations like us have a greater responsibility कि हम ये देखें कि ये बाकी के लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, especially जिनके पास इस तरीके का organization bandwidth नहीं है. Thank you so much, Kashina. That's actually a very interesting point that you have raised. और जया जी, अगर
अगर आप हमें बताएंगी, जयपुर में एक बाल मित्र मतलब राजस्थानी बाल मित्र योजना जो इंट्रोड्यूस करी थी, तो ये बाल मित्र जो है क्या ये सपोर्ट पर्सन की तरह है, उनसे अलग है या एडिशनल कंपोनेंट उसमें जोड़ दिया है? इसके बारे में जरा बताएं आप। सपोर्ट पर्सन का जो गाइडलाइन बनी हुई है, जो रूल्स में पॉक्सो के रूल्स में, उसी को बेस करते हुए राजस्थान सरकार ने बाल मित्र योजना संचालन दिशा निर्देश 2020 को उन्होंने जारी किया है। उसमें वो सब चीजें दी गई है, उसका नाम क्या हो, उस प्रारंभ क्या होगा, परिभाषाएं क्या, जो पॉक्सो में जो सब परिभाषाएं दी हुई है। इसके बाद सपोर्ट पर्सन को जो अपॉइंटमेंट करेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा कि वो जो सामाजिक विज्ञान में सोशल 5 साल का अनुभव और योग्यता MA किया हो और 5 साल का बच्चे के साथ काम करने का अनुभव हो। फिर उसमें है कि पात्रता के साथ उसके बाद CWC उसको अपॉइंट करती है कि DCP एक लिस्ट बनाने के बाद की जो सिलेक्शन प्रक्रिया वो DCP के थ्रू होती है। DCP एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाने के बाद वो CWC के पास में भेज देता है। तो उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसी एक सपोर्ट पर्सन को एक टाइम में 5 केस से ज्यादा उसको नहीं देंगे, क्योंकि 5 केस से ज्यादा देंगे उसको इतना बर्डन हो जाएगा कि बच्चे का प्रॉपर्ली उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब एक बच्चा आता है, उसकी FIR होने के बाद उसके जो 161 के भी बयान कराने पड़ते हैं, मेडिकल भी करवाना पड़ता है। हो सकता है कि छोटा बच्चा अगर प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो पुलिस वाले तो उसका अबॉर्शन नहीं करवा पाएंगे, फिर क्योंकि हमारे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल की भी हमारे जो डॉक्टर्स को भी इतने सेंसिटाइज नहीं है और उनको एक्ट के बारे में अभी भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी बच्ची का जयपुर में हुआ था, वो 12-13 साल की बच्ची थी, प्रेग्नेंट हो गई, स्कूल टीचर के तो उसको करवाया था, स्कूल कैंपस में था। लेकिन वो जब बच्चा प्रेग्नेंट होता है और उसकी फैमिली उतना ट्रॉमालाइज होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे की स्थिति में आ जाता है। तो उसने हॉस्पिटल में मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये लीगल मैटर है। अब बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग, अब फैमिली इतना थे। लेकिन हमारे समाज में अब मैं कहना चाहूँगी एडवोकेट्स हैं, इन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली भाग लेने लगे, उन्होंने सपोर्ट करने लगे। तो किसी ने कहा कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं इस बच्ची की हेल्प कर सकता हूँ, तो वो इस क्षेत्र में आया। क्योंकि पड़ोस के रहने वाले उस बच्ची का उन्हें, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो प्रेगनेंसी नहीं MTP नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई। इसके बाद CWC में भी अभी वो क्लियर कट नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आदेश नहीं दे सकते MTP के लिए, लेकिन अभी भी चल रहा है। क्योंकि कहा कि आप आदेश नहीं दे सकते, निर्देश गाइडलाइन निकाल सकते हो। उनको बता सकते वर्तमान जो कानून उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर 12 साल से बच्चा छोटा है तो उसकी फैमिली की कंसर्न लेके, सपोर्ट पर्सन की कंसर्न जो उसका गार्जियन लेके उसे कंसर्न लेके टर्मिनेट करवा सकते हैं। अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है तो खुद भी अपनी सहमति दे सकता है। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे गैप्स हैं, वो चीजें अभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर हमारे सिस्टम में। तो एडवोकेट ने बहुत बड़ा रोल निभाया, तो बच्ची का टर्मिनेट कराया। तो बच्ची भी 10वीं क्लास में पढ़ रही है, क्योंकि उस समय उसकी परीक्षा भी आने वाली थी। बहुत सारे चैलेंजेस फील्ड में आते हैं। और उसके बाद में ये भी है, बाल मित्र योजना में ये है कि उसकी अगर सपोर्ट पर्सन अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको टर्मिनेशन करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि उसका कोई उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले बच्चे के साथ तो नहीं मिल गया है, या और रिपोर्टिंग टाइम में देगा नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ों उसको उल्लेख किया गया है कि अब इन अवस्थाओं में उनको सपोर्ट पर्सन से रिव्यू भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि वित्तीय स्थिति क्या होगी अगर किसी सपोर्ट पर्सन को उसको हमें पारिश्रमिक देना है। तो उसमें उल्लेख किया गया है कि हमें जे में जो किशोर निधि है उसमें भी उसका प्रावधान है। और हमें कहते हैं कि सपोर्ट पर्सन के साथ साथ जो लैंगिक अपराधों से जो पॉक्सो कानून है उसमें भी उसका राजस्थान में विशेष कोर्स बना हुआ सर्विसेज में, उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है कि पहला जो उसका होगा टोटल उसमें 9,000 रुपये का उल्लेख किया गया है। प्रथम जो उसका होगा जब बच्चे का साक्ष्य अभियान हो जाएगा, जैसे उसके बच्चे का FIR हो गई, 161 के बयान हो गए, 64 के बयान हो गए, मेडिकल हो गया, और उसके साथ साथ जब उसका साक्ष्य अभियान हो उस समय उसकी पूरी रिपोर्ट हर मंथली एक फॉर्मेट में CWC को रिपोर्ट देनी होगी। तो उसके बाद वो 4,500 रुपये का प्रावधान है। उसके बाद जब उसका लास्ट में निस्तारण हो जाएगा तो उस समय उसको 4,500 रुपये और मिल जाएगा। लेकिन ये स्थिति अभी तक पेपर में ही है, प्रैक्टिकल में नहीं है। इसको प्रैक्टिकल लाने के लिए बहुत सारा आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि ये चीजें जो कागज पे लिखी कैसे हम वास्तव में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत चीजें हैं कि बहुत सारे को सपोर्ट पर्सन तो बना दिया, लेकिन वो सपोर्ट पर्सन फील्ड में नहीं जा पाए क्योंकि उनको लगा कि मैं 2-3 केस उन्होंने हैंडल कर लिए, लेकिन बाद में जो उसका कुछ पैसा ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो काफी सारे सपोर्ट पर्सन बैक भी हो गए हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट पर्सन की मॉनिटरिंग सिस्टम भी बना हुआ है। राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, उसको हर 3 महीने में रिव्यू करेगी। और लेकिन ये सिर्फ अभी तक
प्रैक्टिकल में इसको प्रैक्टिकल में लाने की आवश्यकता है। थैंक यू जया जी, आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया क्योंकि ये राजस्थान स्पेसिफिक चीज़ है जो दिल्ली से बहुत अलग है और ये नहीं आई है अभी, तो थैंक यू उसके लिए। इसमें एक बात मैं और करना चाहूँगी, राजस्थान में स्पेशल राहत स्कीम का भी प्रावधान है बच्चे के लिए कि वो जब बच्चा की रिपोर्टिंग हो जाती है तो 12,000 रुपये उसको उसी समय दिया जाता है कि वो उसका मेडिकल है, आवास है, उसकी बेसिक बुनियाद सुविधाओं के लिए। उसके बाद में 1500 रुपये 3 महीने तक उसके भोजन के लिए दे जाएंगे। एक स्पेशल स्कीम है राजस्थान की। Thank you so much. And Kushi, my next question is to you. Do you think the role of the support person also encompasses providing legal support or, to be specific, legal representation for the child? The law doesn't say that. I mean, the rules don't say that at all. But we have considered for a long time whether Enforce should engage a lawyer who can provide legal representation, because there's a lot that we are not aware of. We realized that it's not, even if we did get a lawyer on board, that person may be able to represent in 2, 3, 4, 5 cases, but the range of cases that we handle and the number of cases that we need to have a person in the courts all the time, that's not going to work. Which is why I think our partnership with iProbono has worked out really well for us over the last 1.5 years, where iProbono's panel advocates have gone and done what a lawyer should be doing. So whether it was writ petitions for MTPs, or whether it was asking for interim compensations, whether it was ensuring that the rights of the child during the trial were respected with regard to a special educator, etc., were respected. In all of those areas, I think a legal counsel definitely helps. And as social workers, so to speak, support persons are not aware of how we can push the law. There are ways in which the judicial system can be pushed, which only a lawyer knows. But can a lawyer be a support person? I'm going to say no. There are certain, I'm not saying that lawyers are not sensitive or don't have anything. I know I'm in a very dangerous, I go out and get stoned. But it is the fact that because of the nature of the work that a lawyer does, there is an aggression, there is a certain there is a push which a support person cannot. If I land up at that same police station 3 times in a row, the 4th time he'll say, put the person inside. Like Anand, that person will be inside in the lockup. So we don't want lawyers to antagonize the system. We want the support person concept to be valued, and actually we want people to want support persons to support the system. So let lawyers do what they do best, and let support persons do what they do best. Right. So thanks, Kushi. I think legal representation, yes, like you rightly said, there's nothing like that in the law. The rules specifically state that we need to keep the family informed about what stage the case is at and what's happening in the case. But again, because we work with the children, if there's another lawyer, like in Delhi, we have representation for children from the District Legal Services Authority and Delhi Commission for Women. But if we know that this lawyer is not updating the family, is not in touch with the family, or there's like the accused has been granted bail, there was a bail application that was listed, which does happen a lot of times. And if I know a lawyer that can actually support the family, because they're coming to me and requesting that, can you please help us? So I believe that this is also something that I can do, if it is, I mean, again, back to resources and capacity, that's the way forward. And Usma actually, because Usma is here, so I would like to highlight one particular case Usma had worked on back in 2014 to 16, I believe. And Usma was a counselor in that case, and there was another counselor with Usma. The child had never stated anything in any of her statements right from the FIR, but after their intervention and counseling support that they had provided, the conviction actually happened on that because the child drew images and sketches during her testimony, and because Usma really worked with that child. So on that note, Usma, ever since then, how do you think your role has gone beyond the role of the support person and the POCSO rules? Yes, of course. अगर हम POCSO rules को देखें तो वो सिर्फ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं. What's about pre-trial needs and what's about the post-trial needs. Pre-trial needs like in that case also कि बच्चा कभी कोर्ट नहीं गया. हम लोग भी कभी कोर्ट नहीं गए थे. Literally जब पहली बार हाथ में आई तो तब देखा कि कोर्ट कैसा होता है.
तो बच्चे की जो एंजाइटीज हैं, जो बच्चे का कंसर्न है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट है क्या उसके लिए, तो एज अ सपोर्ट पर्सन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्री ट्रायल विजिट एक प्लान करते हैं बच्चे की, जो बच्चे को हम कोर्ट का स्ट्रक्चर से फैमिलियर कराते हैं कि आप यहाँ पे आओगे, उस दिन आपको यहाँ बैठना है, जज यहाँ होंगे, वो सब चीज़ें कराते हैं। आई थिंक वो बच्चे के लिए 30 to 40% हेल्प करता है थोड़ा काम डाउन करने में। उसकी जो केस से रिलेटेड या टेस्टिमनी से रिलेटेड एंजाइटीज हैं उन्हें कम करता है। सेम विद द फैमिली ऑल्सो। बहुत बार मदर का जब टेस्टिमनी होता है, मदर्स बहुत पैनिक होती हैं, उन्होंने कभी कोर्ट नहीं देखा, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। एंड वी ऑल्सो डू वन थिंग कि प्री ट्रायल प्रिपरेशन, मतलब बच्चे की टेस्टिमनी प्रिपरेशन, नॉट ट्यूटरिंग। ऑफकोर्स जब एक केस होता है तो उसके 8, 9 या 1 साल के बाद बच्चे का टेस्टिमनी के लिए नंबर आता है। तो बच्चा छोटा हो या बड़ा, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं कि, और बैक टू बैक सारे स्टेटमेंट चल रहे होते हैं, पुलिस को क्या बताया, काउंसलर दीदी को क्या बताया, फिर 164 में क्या बताया, डॉक्टर अंकल को क्या बताया। तो हम लोग बच्चों के साथ एक बार कुछ दिन पहले उनकी टेस्टिमनी से बुला के कि उन्होंने क्या क्या अपने स्टेटमेंट दिए हैं पुलिस को, क्या 164 में बोला है, वो सब कराते हैं। आई नो कि अगर एज अ इंडिविजुअल एक सपोर्ट पर्सन होगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वही बात आ जाती है कि रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेशंस है। फिर पोस्ट ट्रायल की बात आती है कि एक्विटल हो गया, फैमिली तो अपील में जाना चाहती है, फिर कहाँ जाएगी फैमिली? अगर एज अ सपोर्ट पर्सन मेरा काम सिर्फ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन तक ही है तो फिर क्या होगा? कोर्ट को बताना, जैसे कि मैं आपको अपने दो केसेस से समझाना चाहूंगी। एक बच्ची थी 14 ईयर्स की, जब हम उससे स्टार्टिंग में मिले तो कभी स्कूल नहीं गई है वो बच्ची, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, घर में ही रहती है, मम्मी कहीं आने जाने नहीं देती, फैमिली के हिसाब से बहुत सीधी है हमारी बच्ची, इसको कुछ नहीं पता। इंसिडेंट हुआ, मम्मी को बताया, फौरन पुलिस को भी बता दिया, फौरन 164 में बता दिया। 1-2 बार मिलने के बाद हमें लगा कि बच्ची को शायद कुछ इशू है, बच्ची बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाती। लॉयर्स को पता होगा और इवन सपोर्ट पर्सन को भी। जो क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको कितनी देर में पहुंचे, कितनी दूर घर है, कितना ज्यादा वो है, तो बच्ची का मेजरमेंट नहीं था, बच्ची को आइडिया ही नहीं था कि 10 मिनट क्या होते हैं, 5 मिनट क्या होते हैं, 2 मिनट क्या होते हैं। तब हमें लगा कि इस बच्ची को शायद अपनी टेस्टिमनी में बहुत इशू होने वाला है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होना ही होना है, उसे कोई वो का राइट है और इसी तरह से होगा। देन भी सडनली हमने CWC से रिक्वेस्ट किया कि आप इसका एक IQ असेसमेंट के लिए प्लीज ऑर्डर बना दीजिए, हम चाहते हैं कि इसका IQ असेसमेंट हो। हमने उसका IQ असेसमेंट कराया, वो बिलो एवरेज आई, हमने उसका एक पूरा डिटेल नोट बनाया, कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि बच्ची को ये प्रॉब्लम है और इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। हमने वो भी लिखा कि इस तरह के बच्चे किस तरह के क्वेश्चंस पे आपका रिप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप अगर स्पेशल एजुकेटर का कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, वो बच्ची के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के पास नहीं है कोई भी स्पेशल एजुकेटर। दे रिक्वेस्टेड अस कि आप ही अगर कर ले, तो फिर हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक स्पेशल एजुकेटर को बुलाया, उनके साथ 2-3 बच्चे की सिटिंग हुई और उसके बाद उसकी टेस्टिमनी हुई। तो कभी कभी लगता है कि बहुत सारा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं बियॉन्ड जाना केस के लिए, उस बच्ची के ट्रायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हमारा केस था, उसमें बच्ची की आईसाइट का कोई इशू था, वो पहले से था, इंसिडेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग जब केसेस में असेसमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ हम लोग 7-8 नीड्स हैं जिस पे काम करते हैं। सबसे पहले हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स चेक करते हैं कि बच्चे को या फैमिली को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। एजुकेशनल नीड्स हैं, हेल्थ की नीड्स हैं जो है, पैरालीगल है, पैरालीगल में आधार कार्ड बनवाना है, फैमिली के पास FIR की कॉपीज डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उन्हें चार्जशीट की कॉपी मिली है या नहीं मिली है। कॉम्पनसेशन पे सब फोकस करते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन आना बच्चे के अकाउंट में, तो क्या बच्चे का बैंक अकाउंट है या नहीं है। कॉम्पनसेशन का ऑर्डर आ गया, वो 3-4 महीने तक डिले पड़ा हुआ है, बच्चे का अकाउंट ही नहीं है। तो इन सब चीजों पे अगर एज अ सपोर्ट पर्सन हम पहले से काम कर लेते हैं तो उस बच्ची की विजन में कोई प्रॉब्लम था। मदर ने बताया कि उसका डे बाय डे विजन कम होता जा रहा है और उसका सर्जरी के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था, पर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कॉम्पनसेशन लगाया नहीं हो पाया, तो फिर एनी हाउ हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया और उसका विजन का हमने उसका कराया और उसकी विजन स्टेबल हो गई। अब हमें अगर कोई पूछे कि जरूरी तो नहीं था कि आपने इसको ऑपरेशन करा दिया, पर अगर देखा जाए तो जरूरी था, क्योंकि बच्ची की टेस्टिमनी पेंडिंग थी
और आइडेंटिफिकेशन बच्चे को करना होता है एक्यूज को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन से नहीं हो सकती, वो उनसे कैसे कनेक्ट हो सकती है या उनका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकता है वो असेस करना भी बहुत जरूरी है। और जैसे कि बाल मित्र की बात कर रहे थे, तो उसमें बोला गया है कि एक सपोर्ट पर्सन को 5 या 6 केसेस हैंडल करने हैं, और उसमें जो उनका 7 पॉइंट है उसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, उस सब को भी काउंट किया है कि सपोर्ट पर्सन को उस सब का असेसमेंट करके उससे रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे कनेक्ट कराना है। तो अगर आप लोग खुद से नहीं कर सकते हो पर आप सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म कर सकते हो कि बच्चे को ये हेल्थ इशू है, तो सीडब्ल्यूसी कैन डायरेक्ट टू द अदर स्टेक होल्डर या हॉस्पिटल्स को कि बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाए। लाइक जैसे असेसमेंट के लिए, आईक्यू असेसमेंट के लिए वहाँ इभास में और एम्स में बहुत लाइन लगानी पड़ती है। तो हम लोगों ने यही प्रैक्टिस किया हुआ है कि हम सीडब्ल्यूसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके ऑर्डर से थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी डेट मिल जाती है, तो प्लीज आप एक ऑर्डर कर दीजिए। तो वो सारी चीजें एज अ सपोर्ट पर्सन हमें देखना होगा कि किस तरह से हमारे केस पे इसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से हमें काम करना है। मुश्किल है, चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली के बाद तो शायद बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं बच्चों को हेल्प सही से मिल भी पाती है या नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पे भी जरूरी है थोड़ा कि अपने रूल्स से थोड़ा सा अपने बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब हम शायद हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू क्वालिटी ऑफ पर्स मिल गया तो मैं बोलूँगी नहीं आपके आंसर के बारे में। एंड आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द टाइम। एक और थीमेटिक इशू है जिस पर बहुत ब्रीफली बात करेंगे, और एक्चुअली आई विल रिक्वेस्ट खुशी टू maybe speak about this. रेम्यूनरेशन ऑफ सपोर्ट पर्सन सबसे जरूरी टॉपिक और एक सवाल जो हमेशा हर सेशन में उठाया जाता है लेकिन इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है कि कहाँ है ये। तो अब रूल्स ही इतने कंफ्यूजिंग है कि कहते हैं कि या तो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा या फिर जो एनालिसिस पॉइंट के अंदर से आएगा या डीसीपीओ के पास जो फंड है वहाँ से आएगा। मुझे लग रहा है फिलहाल सारी अथॉरिटीज पे आपस में कंफ्यूज है कि हम नहीं तो वो दे देंगे, वो नहीं तो वो दे देंगे। So, Kushi, that's what I want you to discuss. Like, how do you think, I mean, remuneration, where is this coming from? Is it actually coming to anybody? And who is responsible for this? Because the rules are, there's so much ambiguity about this. I don't know why I have to answer this question. Okay, we're going to try. This is a huge issue, and like Kushina said, it's a matter of sustainability. I might be able to assist in 2, 3, 4, 5 cases over a period of 2 or 3 years, but if I intended to support children over a period of several years, I'm not going to be able to do this on my own this thing. And even for an organization, unless there's deep pockets, and no organization have deep pockets today, it's really difficult to maintain salaries and also costs. There are huge costs involved in taking a child by auto to the going and picking them up, going to the court, going to the hospital, etc. And it's not once; it's so many times over and over again. And cities like Bombay, Mumbai, and Delhi, and Bangalore, I'm from, distances are huge. So when we look at the monthly claim form, reimbursement forms of our colleagues, we're like, what? 7,000 rupees for auto. It costs 7,000 rupees per auto to help X number of children, and if we don't earmark funds, and it cannot be dependent on organizations. I think somewhere we are all faulting by saying that as an organization we'll do this. Why are we not holding the state? Like, how do we do this? I don't know if we have a response to this, but we are as part of the one of our projects with UNICEF, we are trying to see if we can have national level consultations with people from all states participating, sharing their good practices, Bal Mitra Yojana, etc., to see if the state, when it's such a critical role, we can see what a difference we are making to the life of this child who has a support person. Why is the state not taking responsibility to allocate funds specifically for this? We might not see the light of that money, but at least let's proactively try and have something where we hold the state accountable. The law seems simple, it says unskilled as much as a skilled person, right? Sorry, we are unskilled people, but whatever. As much as a skilled laborer is supposed to get, or under the funds of DCPU, under JJ Act 105, these are all so beautiful on paper, but at one time, our DCPU used to pay us 1,000 rupees per year for a case.
that doesn't even cover my chai pani. So forget about anything else. But Bal Mitra Yojana apparently has 9,000 rupees per case to be paid at different stages. So can all the states come up, or can a national level something be drawn up where we do this? We are seeing so much of investment in training of support persons. We ourselves are working in 6 different states. It is failing. We are investing so much time in identifying, shortlisting, training these people, but eventually if they are not able to work as support persons, then what a waste of resources. So if we can have something that that actually sees support persons being paid a reasonable amount of money, I think that is what will make this entire initiative sustainable. I'll stop here. Thank you so much, Rishi. जया जी 9,000 रुपए आ रहे हैं किसी के पास? जैसे बाल मित्र योजना में जिसमें उल्लेख किया गया है, सिर्फ पेपर तक ही सीमित है, प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है। अब प्रैक्टिकल में करने के लिए उनके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी कि ये जो चीजें लिखी हुई है, तो इन चीजों कब तक हम लोग मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो सपोर्ट पर्सन उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाए, नहीं वरना सपोर्ट पर्सन का नाम बन के रह जाएगा, उसकी मदद नहीं कर पाएगा। Thank you so much, everyone. And on that note, I would actually request Vedi ma'am to read the last segment. I will hand over my role of the moderator to her now. Thank you, Aishwarya. And we hear from all the panelists. We'll start with the remuneration also. When even in Delhi, like state, it's a capital, we are not able to. This is where Samne hai, she's seeing me. We are not able to pay the support persons everything, and we are not able to pay the special relief also for every child. So that is still a big thing, even in a Delhi like state. So when we get the orders from the High Court also for after NTP and things like that, still it is being pending. If they have to put up the WCD department, WCD has to respond back and things like that. What is called special relief, no, it has to be dispersed immediately. So either CWC don't have any monetary power or anything. So it is still a big question mark how it can be actualized in a real situation. It is a big question mark only. So as regards training that you have been talking about doing it is wonderful, because as a social worker, maybe quote unquote, mainly the social workers are coming as support persons. I also don't advocate advocates to become social worker support persons in many perspectives. So the social workers, we study in our MSW program and all, be a facilitator, be an advocate, and be a community mobilizer, be a counselor, be a guide, be a teacher, be a catalyst, and be a social agent and things like that. Here the entire role is being played by one support person. So for that, the government is thinking to pay for the remuneration. It is definitely a failure in the system. The child protection budget and child protection things definitely should improve, and we must definitely work on this. So when we talk in the child protection system and child protection rights, the POCSO survivors and how the support person is being evolved, about in the 10 years time, I'm able to see the progress. Their roles have been stretched to a great level, and with their help, the children are rehabilitated. When we see the rehabilitation, the first step is education. When the child is going to a particular school, then because of the accident, because of the incident, she's not able to go to the same school also. The change of school means lot of process. The family is already in trauma, they are not able to do it. When the support person takes the role of changing the school also. In fact, last week we had a case of eviction of house because of the POCSO incident. The entire family was thrown out of the house also because of the landlord and things like that. So the support person plays a very crucial role in the child's life, and the child has not studied anything, unfortunately getting up into the POCSO, becoming survivor. Then the support person helps the child to enroll in vocational skills, identifying the aptitude of the child, identifying the talent of the child, handholding the child, putting in them in any vocational skills like a beautician course or strategy course or anything. So there's so many roles have been played. It is a multitasking unit, and they are also collaborating with the courts, with JJBs, with CWCs, with hospitals, with education institutions,
with CCA. The children are staying in a CCA because of the incest case and things like that. So they have to work with the child care institution also. So a lot of running around, as you said, your budget of running around between the build up to post of many things. It involves money, it involves a lot of resources also. The thanks to support person, a concept in the POXO survivor, the children are being rehabilitated properly. They are able to see some, in spite of all the arts, they are able to see some smile in their faces. It's because of the role of support persons only. And with this, I'm concluding it. Thank you, ma'am. And just before we go into Q&A, I would request the panelists that if they would like to share some recommendations for support persons so that they can get support in the coming 10 years. So I will start from Kashina. I think drawing from what I was mentioning earlier, I think we need, क्योंकि support person का role भी अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से निभा रहे हैं. I think we need a common understanding, and in some ways, if we can have like a common training curriculum or a framework at some level that tells us what support persons ideally should be doing, what minimum should, कम से कम support person को क्या-क्या करना है, ताकि even if an individual who wants to take up the role and responsibility of becoming a support person, say if that is also a case, then I think they know what they are getting into. अभी हमारे पास वो minimum benchmark in some ways नहीं है कि क्या-क्या करना चाहिए. So I think one important bit is that this will also help us understand what are things that support person should not be doing, है ना. हम सब बोल रहे हैं कि हम सब ने ऐसे काम किए हैं जो support person को करने ही नहीं चाहिए, है ना. हर CWC भी ये बोल रहे हैं, हम support person भी ये बोल रहे हैं. तो at some point in time तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कब हम ये बंद करेंगे करना, है ना. We'll have to think about when do we actually put a stop to saying that maybe we will not be able to do this at this point in time. So I think this common understanding and a curriculum or a framework in some ways will help us, I believe. I also think, and we had discussed this right briefly before, कि ethics and principles, when we're talking about something like this, right, because these are again people coming from multiple disciplines, people like Kushi and I who have probably no social work background and people who come from social work background. क्या ethics है हमारे to actually work as support persons? What are the principles? What are our guiding principles? Because कल उठ के हर decision जो मैं बच्चे के साथ लूँगी, that those principles will help me make those decisions. So I think some common understanding is model guideline section 39 का जो 2013 में आई थी, पर अभी कानून बदलने के बाद और रूल्स भी चेंज होने के बाद शायद उसको भी रिवाइज करेंगे और इस ढांचे में बिठाने की कोशिश करेंगे तो शायद हो पाए. Thank you, Krishna. Kushi, do you have any recommendations? I don't think stakeholders recognize the value of support persons. So in all of our trainings with stakeholders, whenever we're doing FOXO trainings, I think we have to just introduce a little bit about the role of support persons and explain to them what value a support person adds to the whole criminal justice system. Another thing that actually I also wanted to just add, there's no safety protocols in place for support persons. We are going everywhere, any hour of the day, and there's so many situations like, just quickly I'd like to give you an example. When I just started working as a support person, probably my 9th or 10th case too soon, I got a call on one Saturday evening by a CWC and they were saying कि एक बच्चे की मम्मी उसको torture कर रही है, आप अभी के अभी वहाँ चले जाइए. Torture कर रही है, and interestingly that child was a hearing and speech impaired child. तो मेरा जो point of contact है वो वही मम्मी है जो बच्चे को torture कर रही है. तो इस situation में am I the first person who should have been called, or is it the investigating officer, the police officer who should have been called? तो थोड़ा सा जैसे कृष्णा ने कहा कि एक demarcation बहुत ज़रूरी है हमारे रोल को लेकर के भी, और ये समझना कि हम सब जगह जगह जाते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी किस अथॉरिटी से हम लोग जा रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन कि अगर कोई फैमिली हम कह रही है कि हमें मना कर रही है कि आप घर मत आइए, लेकिन उसके बावजूद वही एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि नहीं आप जाइए, आप विजिट करिए, आप पता करिए क्या हो रहा है, तो वो ज़रूरी है. उस्मा, आप कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या डायलॉग जहाँ पे सपोर्ट पर्सन अपने चैलेंजेस शेयर कर सके और उनका कोई सॉल्यूशन मिल सके. जैसे कि आपने बोला अभी कि फैमिली बात नहीं करना चाहती या फिर अनट्रेसेबल है फैमिली. आईओ के पास भी जो एड्रेस है वो सीडब्ल्यूसी के एड्रेस से सेम है, जा रहा है सपोर्ट पर्सन बार बार, लेकिन बार बार फिर वही कहा जाता है कि नहीं आप जाइए और फैमिली को ढूंढिए. इवन हमारे पास एक हक के पास अभी केस है कि उसमें हमने बहुत बार होम विजिट किया, वो उस एड्रेस पे है ही नहीं उस नाम के बंदे कोई, जितने फोन नंबर थे सब ट्राई कर लिया
और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है कि आपको इस बच्चे की रिहेबिलिटेशन रिपोर्ट देनी है। अब आप बताइए एज अ सपोर्ट पर्सन हम कहाँ से तो फैमिली को ढूंढ के लेके आए। हमने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि नहीं है, इस एड्रेस पे भी नहीं है, आईओ के नंबर भी दे दिया, आईओ को भी नहीं पता फैमिली का है। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा डायलॉग जहाँ पे हम लोग अपने चैलेंजेस, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक बच्चों से मिलने के बाद ऑफ कोर्स सपोर्ट पर्सन के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके उस पर कोई भी फोकस नहीं करता है। तो थोड़े कम अंतराल के बाद ऐसे कोई डायलॉग्स होते रहे या ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे एज अ सपोर्ट पर्सन हम लोग जाके अपने सारे चैलेंजेस शेयर कर सके और हमें उनका सोल्यूशन मिले एटलीस्ट। Thank you so much, Usma. I would like to Yes, add please. this. Like Usman said, no, the people who are the system, you keep you working. It's like a hospital. You see only patients. So we also go in a burnout situation, what we call. So we also need catharsis to stop and we exchange our ideas so that we regenerate again. We can work for that also. And I sure you brought in a very beautiful point. There is no security for young social workers like you going to all these small lanes of all Delhi and finding them and in odd hours as you say. So in India we don't have license for social workers or counselors also, and we don't need protection also. In Western countries the social workers have got protection from the police also, but unfortunately we don't have any such things. So I don't know how we can bring that into it. पुलिस बच्चों को पहले लेके हम बात करें। Yeah, and as a support person, you are playing multiple roles. So maybe in the college, in the curriculum level also, the social workers have to be trained to work in a multidisciplinary approach, like networking social workers. So that can be included in your curriculums also. Thank you so much, and we conclude with our discussion. If anybody has any questions other than lunch कब शुरू होगा, please ask. Yes, please. I thank you everyone for your wonderful experiences and thoughts. I had a question about कि ज़्यादातर incest के cases में I operate schools, so we have counselors and social workers, पर incest के cases में काफ़ी बार बच्चियों को स्कूल से निकाल देते हैं. In a particular case, we had been following up daily. They did not open their doors to us. So in cases में can the support person, does the support person have any power to, you know, through CWC or whatever, to ensure that the child come back to school? क्योंकि स्कूल ने ही कंप्लेंट फाइल किया था, तो obviously we were the enemies for the family. तो वो हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे. तो can support persons help in this situation? Support persons have no power. But we should be, an ideal support person should be really well networked to be able to use the resources of the CWC. These are the people who can intervene and make sure that the child is reinstated in the school, or whether it is about reporting the case or moving the child to a safe space. I think we have to rely on the authorities who are vested with these powers. I think CWC, they can come for that. But in my personal opinion, if the child is facing such, the school is facing such different opinions, I will in fact shift the child to another school. We did So- that eventually. Yeah. We told them Because the same space, the teachers, I mean, it will become a gossip matter around the staff room, around the teacher, around the things also. So I would, personally, I would shift the school, shift the child to another school only, so that she can start fresh, so that her memories can fade. I just have one more thing to add. I think in these cases, school is of course one aspect, but I think the safety of the child also, like I mean, if the child is not being permitted to step out of the household also, I mean, that is something that we've seen often in cases जहाँ पे the accused either comes from a common household or from the surrounding area. बच्चे का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. So I think these are all things that the CWC then has the power to assess and take, the required decisions in the best interest of the child. So अगर उनको shift भी करना है या वो सारी चीजें, so all of that does come under the jurisdiction of the CWC. Any other questions, anyone? Hi everyone, thank you for whatever experiences and insights that you had to give. So, I also practice as a support person in POCSO matters, and as what Vedami ma'am has already said, that the role of a support person is a multifaceted agency.
So in the law, it is said that the role of the support person has to be constituted around psychosocial practices. But in practice, when I was practicing as a support person, I also had to voice upon the legal opinions that was also present in the law. For example, it was in 2022 that a 2019's matter was listed for the victim's testimony, and the matter was suggested to me by a lawyer that was in the court. So upon interaction, I found that the child is shines into the development of cerebral palsy, and the court there at that time had noted that the child has language issues. They were of the opinion that the child is understanding only Gujarati language, but actually the child had the origins of Nepal, and moreover she was having cerebral palsy issues. So it was important for me to advocate at that time in front of the court. No, this is not the issue. So in order to do that, I along with the lawyer had to seek for the deterrence of the matter, which was victim testimony, and we had to make sure that the court is aware and the court is held responsible and accountable. While also we inform the same to the CWC, get the order for the disability assessment that has to be done, and to be informed to the court. Why was this necessary? There were two things. One, victim testimony, how it would have been recorded. Cerebral palsy, the child was developing into cerebral palsy, so there were other physical disabilities that she was incurring. So we had to inform the court that you have to be insightful of all these difficulties that the child is facing, and you have to you can't show complexity, you can't allow complexity during cross-examination. The second thing was informing the court that yes, the child is in such a situation post or during the incident, helps also in incurring the child the compensation that he or she deserves. And moreover, coming to my experience in practicing all this legal advocacy in court, the response of Children's Court was not positive. I literally had to argue and fight and show them the various sections of the POCSO Act of the rule. But it was easier with JJBs. Although it was it's difficult and challenging earlier, in the understanding that JJB is like, we are already a child-friendly complex. Why do you need to be there? So we had to remind the JJB that it is in child sexual abuse matters that you see the victim present there. It is not in other matters that you don't see the victims present there all the time. So which is why you have to be apprehensive of the fact that, to show that support. And unlike the Children's Court, JJB did not have support person. And in Delhi, we have different agencies for support person, whether it's a DCPU, whether it's a CSO, whether it's the DCW or the DLSA appointed lawyers. So court also did not understand the idea of support person. For them, the support person is an adult who is sitting with the child, so that the child, for whatever duration of the time that he or she is there, they are just feeling comfortable. So we have to literally fight for it. So it's not limited there. So what is your question actually? So my question is, when we are developing these guidelines of practices of what the role of a support person should be, can we not limit it to only psychosocial practices, but also to this allowing us to be an agent clearly, and we have to also advocate at certain spaces, because it's about child rights at the end of the day. I think you can do 1 year postgraduate diploma in child rights law. But I think And I think really inclusion in the curriculum also, some basic law, Mr. Kundu was telling in the morning session, the children should have some legal awareness. So as postgraduate level, we can also, because everything is available in the net and all the books are available, we can educate ourselves to represent our case for the best interest of the children in the court or JJB also. This is my personal advice to you. Yeah, actually, it's already time for lunch, so maybe we can have another discussion outside the room with all the panelists, and if anybody has any other questions. So I would just like to close the session by expressing my gratitude to all our panelists for sharing their learnings and experiences with us, and I hope we can build upon these recommendations that we've just discussed. And just before going to lunch, I would like to tell you about the two sessions. We have two parallel sessions. There's a session in this room after lunch, which is about pro bono lawyering. 3 lawyers will be talking to law students
about how to balance a career along with pro bono practice. And there's another room, lecture room 2 in the basement, where we have a session titled A Conversation with Stakeholders in the Child Protection Space. We have different stakeholders joining us for this discussion, who will be discussing some pertinent issues around child protection with specific reference to POCSO. Please join us for lunch now. Thank you so much, everyone.